Now just to see how to solve the graphical questions. Another interesting question. This is the graph given, and for A, B, C, D like that. Here the marking is there, scale is given. Distance time graph is distance and time graph. Calculate the velocity of the body, that is the question, as it moves from A to B, B to C and C to D. A to B, B to C and C to D. यहाँ पर हमको इसका क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, यहाँ भी वेलोसिटी निकालना है, यहाँ भी वेलोसिटी निकालना है, राइट. So what should be the solution? Number one, from A to B, when the object is at moving from A to B, so velocity is that change in displacement by net time, change in displacement. So here by time taken to change time. So here what is the change in displacement? Just to see object, यहाँ पर पहले ये डिस्प्लेसमेंट था 3, यहाँ पर क्या था 0, 3 minus 0, दैट इज़ योर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. 3 minus 0 बाई टाइम. टाइम कितना लगा? 5 minus 2. Here it is 2, 5 minus 2, whatever is the time is there, 3 minus, so I am taking it here, the 0 also there, 0, तो 5 सेकेंड. यहाँ पर 0 है, ये 1 है, 1 2 3 ऐसे करके मार्किंग है. सो हियर द डिस्टेंस इज योर 5 minus 0, दैट इज योर टोटल टाइम इज योर 5 सेकेंड. यहाँ से यहाँ इस ग्राफ के दौरान यहाँ से यहाँ क्या क्या, क्या टाइम है? 0 to 5 के बीच 5 minus 0, दैट इज 5. सो आंसर विल बी 3/5 मीटर पर सेकेंड. That is your 0.6 meter per second. That should be your answer. Second part. When the object is moving from B to C, you have to find out the velocity. From B to C, velocity is equal to, अब वेलोसिटी क्या निकालेंगे? यहाँ पर जो वेलोसिटी है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल, डिस्प्लेसमेंट कितना यहाँ पर है, डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सेस है, तो नेट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय नेट टाइम. डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर? इस ग्राफ में देखिए, ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या था? 3, यहाँ भी 3, यहाँ 3, यहाँ 3. Change in displacement of the object is 0. So here we can write it. This is 0 by net time is your 7 minus 5, that is 2 second. That is 0 by anything, 0 meter per second. So conclusion is that if the net change in the displacement is 0, we can say the velocity is 0. Right? Now from C to D, we have to find velocity from C to D. Change in displacement by time taken to change. Change in displacement क्या होगा? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल. यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है? यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0. यहाँ पर क्या है डिस्प्लेसमेंट? 3. सो वी कैन राइट 0 minus 3. चेंज फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल बाई टाइम टेकन. अब यहाँ से यहाँ टाइम कितना लगा है? 10 और 7 के बीच, 10 minus 7, that is 3 seconds. That is your minus 1 meter per second. Minus 1 meter per second. That is your answer. Clear? तो यहाँ से यहाँ को स्पीड निकालना था, वेलोसिटी निकालना था, यहाँ भी वेलोसिटी निकालना था, और यहाँ भी वेलोसिटी निकालना. यहाँ पर हम वेलोसिटी कैसे निकाले? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. यहाँ भी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यहाँ भी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. ठीक है. यहाँ पर आया कितना आया आंसर? 0.6 मीटर पर सेकेंड.
उसके बाद यहाँ बी सी के केस में 0 and here it is -1 meter per second. So definitely object is slowing down. So -1 meter per second. Hello student of standard 9. This is a question, graphical, very important question. The diagram is given in this way. Question number A is that state the kind of motion represented by OA and AB. OA and AB. Number 2, velocity of the body at 10 second and at 48th second. Number C is your calculate distance covered by the body between 10 second and the 30th second. So how we are going to solve it? Number A, which kind of motion is there? OA represent what we are going to say, VT graph is there. VT graph. So definitely if the graph is like that, we have to say that is the uniformly accelerated motion. So OA represent a uniform acceleration. Uniform acceleration or uniformly accelerated motion of the body. And what about AB? What about AB? AB, what we are going to say, here the initial, for AB part, initial velocity is 20 and 20, 20, 20, it is not moving. So here AB, we have to write that AB is your, the object is moving with a constant velocity. Object is having the constant velocity, is having uniform velocity. Uniform velocity means acceleration is 0. No change in the velocity, so acceleration is 0. Right? Now, second part B. The velocity of the body at 10 second and at 40th second. Just you see, 10 सेकंड में ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, उसका वेलोसिटी क्या था 20. So at the 10th second that is 20 meter per second and at the 40th second that is 0. यहाँ पर 0. तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देंगे कि वेलोसिटी at t is equal to 10 second is your v is equal to 20 meter per second and velocity at t is equal to 40 second, that is the 40 second is equal to 0. 40 सेकेंड. यहाँ पर ये ग्राफ जो है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है 0, दैट्स वाई 0. राइट. अनदर क्वेश्चन इज द कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन 10th सेकेंड एंड द 30th सेकेंड. अब देखो 10 सेकेंड एंड 30th सेकेंड के बीच वीटी ग्राफ है. ये दोनों के बीच हम लोग को क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट. अगर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट निकालना. तो मीन्स वी हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ. अब ये ग्राफ हम देखो यहाँ नहीं बनाए, हम ग्राफ यहाँ से, क्योंकि यही दोनों के बीच का हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है. दैट शेडेड पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया. सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ. And the graph is having the rectangle here, the 10 square, in fact 20 20. So that will be the area length into breadth. ये एरिया क्या चीज़ का है, स्क्वायर हमको कैसे समझ में आया, ये 20 और यहाँ से यहाँ 20 स्क्वायर एरिया है, उसके अंदर का ग्राफ. दैट इज योर, वी कैन राइट इट AF into FE. AF into FE. The AF कितना है, AF is your 20 meter by second and FE is your 30 minus 10, that is 20. Answer will be 400
meter. That will be your answer. Other question, just to see it, one graph is given, the VT graph, velocity time graph, of an ascending passenger in a lift. VT graph, एक आदमी लिफ्ट से जा रहा है, ascending passenger in the lift. This is a graph, here the velocity, here the time, here the 2, 10, 12, 2, 4, 4.6, that is given in meter per second, and here the time. Find acceleration number A during the first 2 सेकेंड, पहला 2 सेकेंड में एक्सेलरेशन निकालना है. नंबर बी, between find acceleration between second and the 10th second. Number C, during the last 2 seconds. Number D, which physical quantity is measured by the area under the quadrilateral ABCD, and and you have to calculate it, right? So first we have to find the acceleration. The basic principle, rate of change in velocity, net change in velocity by net time to change the velocity. So number A, acceleration the first 2 seconds, acceleration during the first 2 seconds. So A is equal to, that is we have to find the slope between VT graph, ये जो ग्राफ है बिटवीन फर्स्ट 2 सेकेंड, ये इसका स्लोप का मतलब P by B, we can write it. Here the uniform acceleration is there, we can take the whole this by this. So we can write the final velocity, final यहाँ से यहाँ निकालने के लिए ये final minus initial means V2 by minus V1 by T2 minus T1. ये बेसिक लिख सकते हो तुम लोग, डेल के फॉर्म में भी लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, नेट टाइम. तो यहाँ से यहाँ हम क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी में क्या चेंज है. यहाँ वेलोसिटी देखिए, यहाँ है 4.6 और यहाँ वेलोसिटी 0, तो दैट इज 4.6 माइनस 0 बाय टाइम. यहाँ से यहाँ टाइम बोले तो P बाई B, ये हो गया P, ये हो गया B, स्लोप निकाल रहे हैं. सो यहाँ पर ये है 0 माइनस 2 माइनस 0, ये टाइम, दैट इज़ योर 2. सो आंसर विल बी just you calculate 4.6 by 2, that is 2.3 meter per second square. Acceleration is having a unit 2 meter per second unit square. Number B, acceleration between second and the 10th second. Second and the 10th second acceleration, again change in velocity, V2 minus V1 by T2 minus T1. यहाँ पर ये ए बी बिटवीन सेकेंड टू 10 सेकेंड. सो व्हाट शुड बी द चेंज इन वेलोसिटी. यहाँ पर देखिए वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ है. यहाँ पर वेलोसिटी में कितना है, वेलोसिटी 4.6, यहाँ कितना है 4.6, तो हम लोग लिख देंगे 4.6 माइनस 4.6 बाय टाइम में क्या चेंज है 10 माइनस 2, दैट इज योर 8. तो 0 बाई एनीथिंग 0 meter per second square. That will be your acceleration in the second case. Now third case means C. During the last 2 seconds, last 2 seconds कहाँ, यहाँ 12, यहाँ 10, that is the last 2 seconds. यहाँ का acceleration निकालना है. V2 minus V1, इसका slope, that is C is equal to, acceleration is equal to V2 minus V1 by T2 minus T1, means net change in velocity by net time. यहाँ change in velocity क्या हुआ 12 और यहाँ पर 4.6. So final velocity is your 12. Final velocity यहाँ पर velocity क्या हो रहा है, यहाँ 12 टाइम है, velocity यहाँ पर 0 हो रहा है. सो 0, यहाँ वेलोसिटी के एक्सेस में देखेंगे 0,
और यहाँ वेलोसिटी क्या है 4.6, 0 माइनस 4.6 बाई 2 सेकेंड, दैट इज़ योर माइनस 4.6 बाई 2, दैट इज़ योर माइनस 2.3 meter per second square. That is your acceleration. Negative indicate that here the retardation will be there, or negative acceleration, retardation. Object is slowing down and ultimately it becomes rest. Right? That is C part. Fourth part, D, we have to find the D, the which physical quantity is measured by the area under the quadrilateral ABCD calculated. ABCD, just you see, this is the quadrilateral ABCD. ABCD का हमको एरिया निकालना होगा. एरिया क्या क्या बता रहा है? एरिया अंडर द ग्राफ इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. एरिया अंडर द ग्राफ इज योर वीटी ग्राफ. वीटी ग्राफ अगर है तो इसका हमको एरिया निकालना है. किसका एरिया निकालना है? आई एम शेडिंग इट. इसका एरिया निकालना है. इसका एरिया निकालना है. So acceleration, so area under quadrilateral ABCD gives you area. क्या निकलेगा ऐसे VT ग्राफ से? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इंटू टाइम, दैट्स द लॉजिक, इज इक्वल टू magnitude of the displacement. Magnitude of displacement. Magnitude क्यों बोले? क्योंकि डायरेक्शन हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, इसीलिए magnitude of displacement. That is your area under this. So we can write it AD into DC. That will be AD कितना है? 4.6. 4.6 into DC. DC is your 10 minus 2, that is 8. So if you are going to multiply, you will get 36.8 meter. That is your answer. 36.8 meter, that is your answer. Right? This is the way how we have to find out. So just recapitulate, just to see the graph. We have to find the acceleration here, here, and here, and then the area under this graph. VT graph is there, so definitely slope. And then here also if you are going to see the change in velocity 0, here the retardation, and the area under this is the graph is your V into T, that is your displacement. So this is the way how we have to do it. So A, the answer of A is 2.3 meter per second square. Answer of B is your 0 meter per second square. And answer of C is your minus 2.3 meter per second square. That is negative sign indicates that retardation or the negative acceleration. And area under the graph ABCD, quadrilateral ABCD, is the magnitude. This is your area under the quadrilateral ABCD is called magnitude of the displacement. That is your AD into DC, that is 36.8 meter. That is your answer.